अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो हम GoPro पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो यू गेट अ वाइड व्यू। दिस इज़ द फोर्थ टूर ऑफ मक्का नर्सरी फार्म। ये हमारा एक और ग्रीन हाउस है, विच इज़ नॉट exactly a greenhouse right now because it does not have any cloth on it, the green cloth which actually makes a greenhouse. इसमें different varieties हैं। I'll start from here. ये ficus variegated है। Like I said, I'm recording with the GoPro, so I won't be able to zoom in. ये वही palms हैं, foxtail palms, not in their best shape right now because of all the frost they've been bearing. Date palm, कुछ mixed varieties हैं यहाँ पे। hibiscus है, एक साइकस रेवोल्यूटा का प्लांट है, juniper variegated, एलोवेरा, इसके पीछे करुंदा है। यहाँ पे कुछ अनार हैं। इसके पीछे सिल्वरी है, which is also a shrub. It's a flowering shrub. It bears purple flowers. मज़ीद वैराइटीज़ हैं आगे, तो आपको साथ साथ दिखाते हैं और बताते हैं। Some olives. इसके पीछे कोनोकार्पस है। ये रूफिया है, जो आपको पहले भी दिखाया था एक टूर में। It's ground cover. Some canna, ficus, bunch of roses हैं, it's also called rose wine. ये सामने जो है it's called bottle brush. इसी varieties हैं। ये सुख चैन ट्री है। ये छोटा सा ग्रीन हाउस है, सर्दियों में इसको कवर कर लेते हैं और जो नाजुक वैराइटीज़ होती हैं उनको हम इधर अंदर बस शिफ्ट कर लेते होते हैं। These are two huge bicarnias. ये ब्लैक ग्रास है, it's a ground cover, absolutely ideal for making borders. Washingtonia palms, yucca, सामने बड़े वाला ग्रीन हाउस है जो आप लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। ये नर्सरी का ड्राइववे। ये all this trash needs to be shifted out of the nursery. We're still waiting on the guy. Let's keep it short and to the point. Mixed varieties हैं ये, they're not arranged properly. Start किया हुआ प्रोसेस को, but like everything, it takes time. ये एक बहुत खूबसूरत juniper का ट्री है। Not sure if you can see it properly because of the sun being at the back. ये हमारी cement planters making factory है, which is not operational right now because unfortunately कोई काम का कारीगर नहीं मिल रहा हमें। ये हमारी नर्सरी का कॉर्नर है। This is where our nursery ends.
That's the exact corner. ये एक और ग्रीन हाउस है, इसका भी विज़िट आपको इसी वीडियो में करवा देते हैं. I'll keep it short. It's a huge yucca which is outgrowing the greenhouse. It's pine. Look out. More fruit plants. Another pine. Amrud. Guava. ये jacaranda है. As you can tell, a lot of work is underway at the nursery. काफ़ी कुछ shift हो रहा है. That's why it's not in the best shape right now. But inshallah you'll see it'll get better with time. इन्हीं वीडियो से आपको आइडिया हो जाएगा. Inshallah future videos will keep on getting better, the nursery will keep on getting better, and you'll see the results by yourself. This is where the other greenhouse ends. कुछ कनेर है, कनेर के अंदर से होता हुआ जा रहा है. Bougainvillea blooming, more कनेर. यहाँ पे ज़्यादातर ये जो सेक्शन है, यहाँ पे ज़्यादातर आउटडोर प्लांट्स होते हैं. Sambang, another huge Washingtonia palm. ये प्लांट्स अभी अरेंज होने वाले हैं सारे. मिक्स varieties पड़ी हुई हैं. This one I'd like to show is it's called a Proprietor. It bears red flowers. Absolutely beautiful flowers. आजकल इस्लामाबाद में कहीं पे ब्लूमिंग पे भी है. इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको वो भी. Fiddlewood, कचनार, rubber tree. Like I said, mixed varieties. I'll end this video here, and I hope I can show you the progress. Inshallah soon. Thank you for watching. Thank you for your time. Please do like and subscribe to our channel and share with your friends. And any feedback, be it positive or negative, is always welcome. यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा नर्सरी का ओरिएंटेशन का. ये वो लार्ज ग्रीन हाउस है जो आप विज़िट कर चुके हैं ऑलरेडी. Let me just take you to the other corner of the nursery as well. I know I end the video. Appreciate your time if you're still watching. I'll just quickly Google through to the end. ये नर्सरी का टोटल एरिया 12 एकर्स है. यहाँ पे भी हम आउटडोर प्लांट्स ही ज़्यादातर रखते हैं. ये वॉल नई बनी है. This marks the end of our nursery. Right through there is the other end. एक ये end है. अगर कभी इत्तेफाक हुआ मेरे पास कोई ड्रोन अवेलेबल हुआ, so I'll show you guys a bird's eye view of the nursery as well, inshallah. Thank you for watching. Assalamu alaikum.